Hello class, welcome back. Welcome back to today's video. So class, as you know, we have completed our syllabus and I have already discussed few things with you like multimedia, internet and things like this. So now today I am going to explain once again logo. Okay? ठीक है. So what are the things that we have to read in this chapter? The thing that we have to read in this chapter is logo, about the logo turtle, and then logo screen, home of the turtle, and exiting logo. Logo से बाहर निकलना. These are the things that I have to discuss with you today. Now, here logo. So logo stands for language of graphic oriented. What is logo? Logo stands for language of graphic oriented. ठीक है? Logo is a programming language. Which type of language? Logo is a programming language. Now what is a programming language? Programming language is such a language where we instruct computer in a certain code, and computer then what it does, it follow the computer it what it does computer then follow the command and do the work accordingly. So that is what programming language. So logo is such a is a simple programming language, and it is mainly for the kids because it is the basic coding language which kids learn. And logo is used for logo is used to draw figures, calculate numbers, and print words by giving simple commands. ठीक है, by giving simple command. You can draw different shapes and figure on the computer screen with the help of logo. So what we can do on the logo screen, we can draw simple command. Okay. Next is what? Logo turtle. Next is what? Logo turtle. Logo uses turtle to draw figures and lines on a screen. Logo uses turtle to draw figures and lines on the screen. ठीक है? Logo क्या करता है? Turtle का use. Now what is turtle? So here we are not talking about this animal. ये इस animal turtle की बात हम नहीं कर रहे हैं. We are talking about this triangular turtle. So what is turtle? Turtle looks like a little triangle. Turtle, what it does? It looks like a little triangle, है ना? It looks like a little triangle on the screen, on the logo screen. It works like a pen to draw figures and lines. What it does? It works like a pen to draw figures and lines. The pointed end of the turtle is called the head. The pointed end of the turtle is called head, and the wider end of the turtle is called its tail. That means this part, this upper part is what? This pointed part is what? This pointed part is head, and this flat surface, this is what? This is the tail. The pointed one is the head, this one is the head, and this one is what? This one is tail. Turtle can move right, left, backward and forward on our command or instruction. So turtle can, what it does? It can move right also, then left, then backward and then forward on our command. ठीक है, तो same thing I have told you that logo is what? Logo is a programming language, and what it does? Logo is a programming language and it helps the computer to work according to the command. Fine. Now next is,
सो वी हैव अंडरस्टूड दैट टर्टल क्या होता है. टर्टल एक ट्रायंगुलर शेप होता है, उसे हम टर्टल बोलते हैं. और टर्टल का जो पॉइंटेड हेड होता है दैट इज कॉल्ड एज हेड. जो पॉइंटेड पार्ट होता है दैट वी कॉल हेड. एंड जो फ्लैट सरफेस होता है नीचे का दैट वी कॉल एज इट्स टेल. So turtle can move right also, left, backward and forward on our command and instruction. ठीक है, fine. Moving ahead. Next is starting logo. That means how you can start a logo. So starting of any command in Windows 7 or 10 is very simple. किसी भी कमांड को स्टार्ट करना विंडोज के लिए क्या होता है, बहुत ही इजी होता है. Click on the start button. First is what you have to click on the start button. Then you have to click on the all programs and then click on the MSW logo. The logo screen, what it will do, it will appear. Click on the start button, click on the all program and MSW logo screen will appear. Okay, so this is how logo screen looks like. So let me open the logo. Logo is here. Logo यहाँ पे मेरी screen के top पर ही है, तो I can click it here also. Okay, see this is what, this is the logo screen. This is what, this is our logo screen. And you can see here, this is what, this is turtle. अब ये जो triangle है छोटा सा, ये क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, we call it as turtle. So it move ahead, it moves left, then right, then this. According to our instruction it moves. ठीक है, चलो moving ahead, चलो moving toward our book. Logo screen. Now the next topic we have to read about is logo screen. Before working in logo, you must understand the logo screen. Before working in logo, you must understand what the logo screen. So this is what, this is the turtle, this is the main screen, this is the commander window. These all are the part. And देखो commander window is again divided into two part. Commander window is divided into what? In two part. A recall list box and command input box. ठीक है, these are the two part. Recall list box and the command input box. As you can see in the picture, the logo screen is divided into the two main part. First is main screen and the other one is what? Commander window. Now, main screen. It is the graphic area of the window where the figure are drawn. So the main screen is that place of the logo screen where what we do, where we draw the figure. जहाँ पे हम क्या करते हैं, we draw the figure. तो उसे हम क्या कहते हैं, we call it main screen. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो main screen कहाँ है, this is our main screen. ठीक है, ये जो white surface आपको नजर आ रहा है, this is what, this is the main screen. Okay. एंड देखो विंडो स्क्रीन पे अगर देखो तो ये जो व्हाइट सरफेस आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, दिस इज द मेन स्क्रीन. इसे हम क्या कह सकते हैं, वी कॉल इट एज अवर मेन स्क्रीन. फाइन, ठीक है, चलो. नाउ मेन स्क्रीन की बात हो गई. नेक्स्ट इज आफ्टर द मेन स्क्रीन, नेक्स्ट इज व्हाट, कमांडर विंडो. ठीक है, आफ्टर द मेन स्क्रीन नेक्स्ट इज कमांडर विंडो. This area of the window is used to write the command that will draw shapes and figure. So commander window means what, this area. This commander window नाम से क्लियर है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, we give command. ठीक है, तो this area of the window is used to write the command that will draw shapes and figure. So these command will draw the shapes and figure. ठीक है, again the commander window is divided into the two parts. See,
Here what happened? Commander window is divided into two parts. Okay, now the next thing is we have seen that the logo screen is divided into two parts. First is the main screen, the other one is commander window. And I have also told you that commander window is divided into two parts, that is recall list box and command input box. So let us understand that. Now commander window. This area of the window is used to write the command that will draw shapes and figures. So commander window is used for what? This area of the window is used to write the command that will draw shapes and figure here. The commander window is again divided into two parts. Commander window, what happened? It is again divided into two parts, that is recall list box and command input box. It is divided into two parts. First is recall list box and command input box. Okay, recall list box. Whatever is written in the command input box is recorded in the recall list box. Whatever the thing is written in the command input box is called the recall list box. Now the next is command input box. All the logo commands are entered in this area. ठीक है, recall list box क्या होता है? जो भी चीजें हम लिखते हैं लोगो स्क्रीन पे, वो हमें कहाँ दिखती है? रिकॉल लिस्ट बॉक्स में दिखती है. और कमांड इनपुट बॉक्स क्या होता है? वो कमांड जो हम लिख के लोगों को देते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर लोगो स्क्रीन एंड यहाँ पे देखो, यू कैन सी हियर, इस लोगो स्क्रीन पे यू कैन सी दिस इज व्हाट? कमांड. This whole is what? Command input box. So this is this whole is commander window, and this is what? Command input box, and this one is recall list. This one is recall list. ठीक है, जो भी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर प्रेसिंग द एंटर की, वो हमें इधर क्या होगी? नजर आएगी. ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिखें, अगर मैंने लिखा यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे मेंशन किया for FD, I will explain you this FD and all 100 and see what happened. जब मैंने FD 100 यहाँ पे लिखा, मतलब कमांड इनपुट बॉक्स में लिखा, तो वो क्या हो गया? वो सिर्फ कमांड इनपुट बॉक्स में नहीं रुका, वो आगे ऊपर रिकॉल बॉक्स में चला गया. रिकॉल लिस्ट में वो क्या हो गया? वो चला गया. फाइन. तो दिस इज द कमांडर विंडो, और कमांडर विंडो के साथ क्या होती है? वी कैन मूव दिस विंडो ऑल्सो. ठीक है, अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वी कैन मूव दिस विंडो ऑल्सो. एंड यहाँ पे हमने क्या किया? इसे फॉरवर्ड किया. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज होम ऑफ द टर्टल. अब अगला होता है कि व्हाट इज होम ऑफ द टर्टल. ठीक है, टर्टल का होम हम किसे कह सकते हैं? So whenever you start logo, you can see that turtle is in the middle of the screen. Whenever you will start logo, आपको एक चीज दिखेगी कि turtle कहाँ है? middle of the screen पे आपको turtle क्या होगा? नजर आएगा. ठीक है, ठीक है. Whenever you will start a window, you will find the turtle in the middle of the screen. Now this is the starting position of the turtle and it is called the home of the turtle. इसे हम क्या बोलते हैं? We call it starting position of the turtle and we call it the home of the turtle. ठीक है, इसी हम क्या बोलते हैं? We call it home. The blank area where the turtle move is called the field of the turtle. वो ब्लैंक एरिया जहाँ पे टर्टल मूव करता है उसे क्या हम कहते हैं? फील्ड. ठीक है, तो जब हम लोगों की स्टार्ट करते हैं, जब हम लोगो स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? लोगों के स्टार्ट करने पे हम देखते हैं कि जो हमारा लोगो है, वो मतलब जो हमारा टर्टल है, वो कहाँ रहता है? वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन रहता है. लोगो कहाँ दिखता है? सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे हमें लोगो नजर आता है. तो जब हमें वो लोगो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे नजर आता है, तो अब हमें एक चीज और क्या पता चलती है? सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे होने के साथ साथ
ठीक है, जब वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे होता है आफ्टर प्लस सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे होने के साथ साथ ये जहाँ पे वो मूव करता है वो एरिया हम क्या कहते हैं, मेन स्क्रीन। ठीक है, दिस इज द फील्ड ऑफ द लोगो। ठीक है, जहाँ पे ये मूव करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट फील्ड ऑफ द लोगो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट फील्ड ऑफ द लोगो। ओके, तो टर्टल यहाँ पे मूव करके शेप्स को क्या करता है, ड्रॉ करता है। ठीक है, अब इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझने के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है, हम पढ़ रहे थे होम ऑफ द टर्टल। तो होम ऑफ द टर्टल क्या, सेंटर ऑफ द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन का मिडल पार्ट इज व्हाट, स्क्रीन का मिडल पार्ट इज होम ऑफ द टर्टल। स्क्रीन का जो सबसे मिडल पार्ट होता है, बीच का पार्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वी कॉल होम ऑफ द स्क्रीन। ओके, नाउ ठीक है, मूविंग अहेड। ठीक है, सो इफ यू वांट वी कैन सेंड अवर टर्टल बैक टू द होम आल्सो। ठीक है, बैक टू द होम हम भेज सकते हैं टर्टल को। नाउ मूविंग बैक, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने बात की किसके बारे में, रिकॉल इज कमांड इनपुट एंड होम ऑफ द टर्टल। हमने होम ऑफ द टर्टल की भी बात की। सो whenever you start logo you can see that turtle is in the middle of the screen. This is the what, this is the starting position of the turtle and is called the home of the turtle. The blank area where the turtle moves is called the field of the turtle. Blank area जहाँ पे turtle move करता है वो क्या कहलाती है, field of the turtle. Next is what, exiting logo. अगला is what, how we can exit the logo. ठीक है, so there are two way to exit the logo. ठीक है, what you can do, you can click on the file menu in the menu bar, click and then click exit, or you can just type buy. ठीक है, जब हम किसी से दूर जाते हैं तो what we do, we type buy, मतलब we say buy. Similarly यहाँ पे भी what you can do, you can type buy. तो चलो करके देखते हैं, but before moving to the last thing, let us see one more thing. अब देखो, टर्टल के बारे में बेसिक सारी चीजें तो हमने समझ लिया। ठीक है, बट टर्टल के बारे में अब एक चीज जो बच रही है, अब वो ये बचती है, टर्टल के बारे में जो बेसिक चीजें बच रही हैं वो ये अब बचती हैं कि टर्टल पे हम कैसे वर्क करेंगे, टर्टल पे हम कैसे कमांड देंगे, कैसे हम उसको मूव कर सकते हैं, हाउ वी कैन ड्रॉ द फिगर, हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस टू ड्रॉ द फिगर। सो लुक, turtle is a very simple programming language and it is used to give the command to the screen, to the computer. For what it is used to give the command to the computer, and that too किस लिए, command किस लिए हम देते हैं, हम command देते हैं कंप्यूटर को, हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं so that कंप्यूटर क्या कर सके, हमारे अकॉर्डिंग वो वर्क करे। टर्टल में भी कुछ ऐसा ही, जितना जो आप कमांड दोगे टर्टल क्या करेगा, उसी हिसाब से टर्टल विल मूव, टर्टल क्या करेगा उसी हिसाब से वो मूव करेगा। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, अब अगला टॉपिक आता है मेकिंग शेप्स हियर। ठीक है, तो फ्यू ऑफ द थिंग्स आर हियर जो कि वी विल रीड फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर, वो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द कमांड। ठीक है, कमांड ऑफ द टर्टल के बारे में वी विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर एंड वी विल मेक डिफरेंट शेप्स आल्सो। फाइन, so right now I'm here to show you several commands. So like fd, if I give a command fd 100 or fd, yeah, 100, and if I press enter, see what happened, turtle क्या हुआ, आगे मूव हो गया। तो these type of command we will study in the next chapter है ना, अगले चैप्टर में we are going to study about all these things. Now we have to do the self evaluation. Right now we have to do the self evaluation. अभी हमें क्या करना है, हमें self evaluation करना है। How we can
चलो, let us do the self evaluation. Okay, this is what सेल्फ इवेल्युएशन. चलो देखते हैं अब इसके बारे में क्या रह गया, कितना करना है. So this is about the logo. So I know that logo stands for language of graphic oriented. Language of what? Language of graphic oriented. ठीक है. I know that logo stands for language of graphic oriented. So this is correct. ठीक है. I fully know that logo is what? Logo is a programming language. Yes, I fully know that logo is what? Logo is what? It's a programming language. Yes, it's a programming language. ये मैम ने समझाया भी आपको कि लोगो क्या होता है. लोगो एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लोगो की मदद से हम क्या कर सकते हैं. ओके. ठीक है. प्रोग्रामिंग ला. ठीक है. तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Now moving toward the next thing. I fully know that logo screen is divided into two parts. Main screen and then the commander window. Logo screen is what? Divided into the two parts. Main screen and the commander window. So yes, this is correct. Okay. I know that commander window is used to write command. Well, yes, commander window is used to write the command. I know that triangle on the middle of the main screen is called the turtle. ठीक है. I know that what? Triangle at the middle of the screen is called the turtle. Well, this statement is also correct क्योंकि हमने देखा ना. देखो यहाँ पे middle of the screen पे जो turtle था, रुको, let me bring it to the middle of the screen first. Clear screen. Now see. अभी ये कहाँ है? Okay, now. Next is what? ठीक है. तो हमने होम देख लिया. ठीक है. होम ऑफ द टर्टल. तो यहाँ पे जो टर्टल सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आ गया, दिस इज व्हाट? होम ऑफ द टर्टल फिन. नाउ मूविंग अहेड. आफ्टर दिस, नेक्स्ट इज व्हाट? I know that a triangle on the middle of the main screen is called the turtle. Yes, I know that triangle on the middle of the screen is called the turtle. Okay, now. I know that the middle of the logo screen is the home of the turtle. तो yes, ये हमें पता है. Now let us do the tick the correct option. Although we have already done this several times, but yes, come on. Now moving ahead. The next thing is dash is the logo turtle. Now which of the following is the logo turtle? Whether the logo turtle is a triangle, or is it a question mark, or is it none of these? So turtle is the triangle is the logo turtle. ठीक है. Triangle is what? Logo turtle.
Logo commands are entered in dash box. In which box logo command are entered? लोगो कमांड की बात हो रही है, किस बॉक्स में एंटर होंगे? कमांड इनपुट. ओके. पॉइंटेड एंड ऑफ द टर्टल इज नोन एज द पॉइंटेड एंड. जहां पे पॉइंटेड एंड होती है टर्टल की उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ पॉइंटेड एंड ऑफ द टर्टल इज कॉल्ड इट्स हेड. देखो, अगर हम एक टर्टल ड्रॉ करें लाइक समथिंग लाइक दिस इज द टर्टल, तो बताओ दिस इज व्हाट, ये क्या है? एक पॉइंटेड एंड है और इस पॉइंटेड एंड को हम क्या कहते हैं? हेड ऑफ द टर्टल. इस पॉइंटेड एंड को वी कॉल हेड ऑफ द टर्टल. नाउ स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द टर्टल इज नोन एज द स्टार्टिंग पोजीशन. जहां से टर्टल स्टार्ट करता है दैट पोजीशन इज कॉल्ड स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द टर्टल इज कॉल्ड एज होम. ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? वी कॉल दैट एज होम. तो चलो लेट अस रिवाइज इट वंस अगेन. ट्राइंगल इज द लोगो टर्टल. Logo commands are entered in command input box. A pointed end of the turtle is known as head. Pointed end जो होता है ट्राइंगल का, किसी भी टर्टल का जो पॉइंटेड एंड होता है उसे आप क्या कहते हैं? We call it as head. Now the last one, question number 4 is what? Starting position of the turtle is known as the starting position of the turtle. टर्टल के स्टार्टिंग पोजीशन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट होम. टर्टल के स्टार्टिंग पोजीशन को वी कॉल एज होम. ठीक है, हम उसे होम कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. लोगो इज व्हाट? लोगो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लोगो इज अ विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? लोगो इज अ, यहाँ पे हमने, वेट अ मिनट, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना दैट लोगो इज व्हाट? इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लोगो इज अ programming language. You write command in logo with the help of, we write command in logo with the help of what? With the help of a keyboard, है ना? With the help of a keyboard what we do? We write the commands in logo. Okay. The graphic area in the logo is termed as, graphic area जो लोगो का है उसे हम क्या कहते हैं? ग्राफिक एरिया क्या कहलाता है? मेन स्क्रीन. वी कॉल इट एज मेन स्क्रीन. The turtle is like a small triangle. Turtle क्या होता है? Turtle is just like a small triangle. Turtle is just like a small triangle. Now next is what? The area where the turtle moves is called, the area where the turtle moves is what we call that field of the turtle. ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में we have studied here. Okay, okay. फाइन. हाँ, तो मैं आपको दिखाई थी field of the turtle. See, the blank area where the turtle move is called the field of the turtle. Fine. Okay. इतना हो गया. Now the next thing that we have to discuss is, अच्छा हमने इतना कर लिया. Now next is give one word. Now next is what? Give one word answer. So बेटा that we will do in our next class. That we will start in our next class. ठीक है? Okay. Fine. So today we have started the revision of our chapter, this chapter, that is logo, and now we will do the revision as we have completed the syllabus, and the rest of the things I will discuss with you in the next class. And don't forget to complete the exercise question answer of this chapter and start learning for your examination. Okay, so this is it for today, I hope. And the next chapter that we are going to discuss is commands in logo. So that chapter is also very interesting and we will start it from tomorrow. Okay.